All right, thank you. Om Gurudeva Namah. Okay, so let me share the whiteboard with you people. And before we start the Punarvasu Nakshatra, I have a question, right? And I'll have this question before, no, or after I tell you something. Raja Ram was born in Punarvasu. Okay, so Raja Ram was the reincarnation of Vishnu, right? So which reincarnation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which? 8. Sorry? 8. Eighth. So remember this, okay? Raja Ram was the eighth reincarnation of Vishnu Ji. Okay. All right. So Raja Ram was born in Punarvasu. And so, guys, at least Raja Ram or Vishnu Ji should have liberty and authority to be born in a particular nakshatra. Yes or no? Yes? Yes. He is the one Yes, who sir. could have कि मुझे इसी नक्षत्र में पैदा होना है. Because all 27 nakshatra are like standing like this and think राजा राम जी आप बताओ आप मेरे नक्षत्र में पैदा होगे इनके नक्षत्र में किसके नक्षत्र में आप पैदा होगे, right? Before we understand Punarvasu nakshatra, the first question that came to my mind was why Raja Ram selected Punarvasu nakshatra. That's the most important thing out of the 27 nakshatras. Sir, it's a nakshatra of Jupiter. Okay, there are two more nakshatras I mean, as well. For the duties he was given to come on this earth, he could Okay. fulfill those duties So in what this were- nakshatra. what- Like if he was born in this nakshatra, he could do that. What were those duties? To kill Ravana. What else? Sir, for balance. Sorry? For balance. For balance, okay. In each and every manner kind of relationship, Purushottam Ram is epic in this. So why he is a Purushottam? So Maryada he has Purushottam. it is. ideal to us to given us कि how to live with your family, with your brother, like this, with your friend also. Okay. Sir, can I? Yeah, sure. Maryada, yes. Basically, Raja Ram Maryadam Purushottam hai, और after this means the main purpose of him would be after the chaotic situation of Adra Nakshatra, something universe. That's why he took birth in this earth. He wanted to teach forgiveness. Fantastic. What else? So he wanted to set an example to the world that how you are able to overcome difficult situations and how to be in harmony. Basically, to set an example Yes. to the world, maybe. Fantastic. Is it because So how to live life beautifully? I mean, not beautifully, but in a balanced way. Perfect. Yes, Nandita? is it because the goddess of this nakshatra is Aditi and she's the mother, mother of all gods, including Vishnu? Okay, fantastic. Punarvasu means like punar, like, taking efforts and doing it. So Puna means repeat. So Puna means repeat. Punar means yes. Reincarnation of the Vasu. Okay, Dr. Madhvi. I feel that पुनर्वसु में इसलिए लिया होगा उन्होंने birth क्योंकि there is a cycle of destruction and recreation to maintain the balance and जो आगे भी maintain रहेगा for the future, and so that Vishnu ji is reborn again, like once now he is born in Punarvasu, so this is an indication that आगे भी he has, like he will be coming in the future as a new beginning. Okay. I thought this. Yes, Dilpreet. Fantastic. Yeah. Sir, the nakshatra was in the Lagna with Jupiter, the Lord itself. Moon and Jupiter in the Lagna. Yes. Karka Lagna.
So I mean, why, maybe if you ask the question why he did not choose the other two nakshatras, because the Lord was sitting in the same Rashi. Okay, that is one technical point. On technical point, yeah, I mean, nothing beyond that. I understand. Okay, I have a question for all of you, so that my always my my SOP is that I ask few questions because of which you people get into the alignment where I want you people to be. See, I personally believe, and my Guruji, Neemkaroli Babaji personally believes, one quality of Raja Ram, okay, which is the biggest of all the qualities, right? Raja Ram was the most reliable reincarnations of Vishnuji. The most reliable. Someone who would do everything for others only. How many of you will say yes to this? Yes, Yes, sir. definitely. Yes, sir. Right. The most reliable nakshatra in this 27 nakshatra belt is Punarvasu, where people, with Punarvasu will not cheat. But mind it, that is only going to have to happen if the other planetary positions are supporting it. Like Raja Ram had 5 exalted planets, right? So there were other exalted planets supporting. So if you can say that my ex-girlfriend was Punarvasu and she was like the most deceptive one, it is possible. Why it is possible? Because maybe her 6th lord, or maybe the 8th lord, or the 12th lord, or the 7th lord was in the Punarvasu. The 7th lord in Punarvasu gave many marriages and many relationships. If your 7th lord is in Punarvasu, you know what is the exact meaning of Punarvasu? Is repetition, again and again. Okay, the meaning of Punar is repeat. Okay, the word Punar means repeat, and the Vasu means prosperity, wealth. Repetition of prosperity, regaining of prosperity. When you regain the prosperity, you lose a thing and then you regain it. That's what is Punarvasu all about. But even this is a very universal reason that, okay, he was reliable, he was not supposed to cheat anyone, right? He has to kill Ravana, and that was the aim of life, right? He has to give lot of things to others, that was the aim of the life. But then there is a term which is coming in Rig Veda, that the ruling deity of this particular nakshatra is Aditi. As somebody just mentioned, Aditi, the mother goddess of all the gods, and also the mother of all the 12 Adityas, which are 12 months. जो हमारे 12 महीने. In the Rig Veda, it is written that Aditi is the daughter of Daksha. Aditi is the daughter of Daksha. But there is one confusing line which is written in the Veda, is that Daksha was born out of Aditi and Aditi was born out of Daksha. Should I repeat? Aditi was born out of Daksha and Daksha was born from Aditi. Can somebody try to explain this? What came, like the example that we have, the first the chicken came or the egg came? Yes, Dilpreet, you can explain. You've raised a hand. Oh, we forgot to lower down it. Yes, I'll lower it. Okay, thank you.
So this was my first confusion when I started studying about goddess Aditi, that how it is possible that Daksha was born out of Aditi and then Aditi was born out of Daksha. This is something which is clearly written. But I got the answer of this, which I'll be telling you right away. But I want some of you can use little bit here. Sir, sir, it's a repetition, sir. It's Punarvasu, that's why. Maybe. Repetition of what? Sir, because of Punarvasu is meaning of repetition. So? That's why, sir. कि उसने उस जन्म लिया अदिति ने एक्चुअली सर इनको अदिति को फीमेल गॉडेस बोला जाता है और ये एक ऐसा है कि इनका जो रीइंकार्नेशन हुआ वापस जो दक्ष के यहाँ हुआ एज ए शक्ति के रूप में. But then how was Daksh born? I agree to what you're saying. वो शक्ति के रूप में ही पैदा हुए, लेकिन दक्ष कैसे पैदा हुए अदिति से? Sir, can I try biological way? Sir, in biology, it's written omnicellula, e-cellular. That is, life comes from pre-existing cells. So, I think like Aditi. Actually, सारे गॉड सर अदिति से ही हुए हैं, जितने भी गॉड हैं. But then how is Aditi born from Daksha? वो कहते हैं ना कि शक्ति रूपा सर. It's a cycle. Yes, yes, Pawan ji, you're right. Okay. Could there be a reason? Sir, does it have something to do with Daksha's head being Nothing replaced? to do with the Daksha's head. Let me ask you a question first. Dr. Pooja was saying something very, very good, very, very right technically. Forget about Daksha and forget about Aditi. Okay. What came first, chicken or an egg? It is still biology is a science of exception. No. It's not Well, still a problem. No, it is there. The answer to even that question. सर अदिति पहले आई हैं, उसके बाद जो है दक्ष आए हैं और उसके बाद जो है अदिति का जो दूसरा रीइंकार्नेशन हुआ है दक्ष की पुत्री के रूप में. अच्छा, चलो बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो आप. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. योगी, यू वांट टू से समथिंग? सर आई फील लाइक दक्ष जैसे हो गए एक नाम है, ये एक वो भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक जैसे इंद्र है, इंद्र एक पदवी है, इंद्र एक ही पर्सन नहीं रहता हमेशा. ऐसे दक्ष की भी पदवी जो प्रजापति की है, क्योंकि प्रजापति दक्ष कहते थे, प्रजापति की भी पोजीशन चेंज होती रहती है हर मनवंतर में, हर कल्प में. इंद्र भी जो आज इंद्र हैं वो अगले मनवंतर में इंद्र राजा बलि होंगे. तो इस हिसाब से भी तो हो सकता है कि वो पदवी है जो कि अदिति से दक्ष हुए, दक्ष से फिर अदिति हुई. अब दक्ष कोई और भी हो सकते हैं आगे चल के. जो दक्ष हैं इनके पिता कौन है? Who's the parents of Daksh? Brahma. ब्रह्मा जी. Okay. So all the 12 Adityas and all the gods that are born from Brahma. Yeah. He's one of the Prajapatis. Yeah. Daksh. Okay. Yes. So all the Adityas and all the gods are born from their parents asexually. First thing. Okay. None of them are born sexually. Yes. This is the Yes, first sir. thing. Okay, just keep this in mind. Okay. When you say he's got 1000 putras, he's got 13, he's got 12. So make sure you have a clear perception in mind that all of them are born asexually. First thing. Right? Yahan tak clear hai? Nobody is born sexually. Because if it is a Satoguna, if it is God, they are not born biologically. Okay. Right? So yeah. So Manas Sutra. So that is one. Manasputra. Yeah. So that is now the second one is okay. Brahma wanted the purest form of an energy to give life to his creation.
Okay. Now, after Shiva, here is Adra energy coming from Shiva. The purest form of that Adra energy is actually the Aditi energy. Why? Actually, वो जो आप एक limitless time and space की बात करते हैं, जो भोलेनाथ ने create की थी, that is actually Aditi. Okay, first listen this very carefully. जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है. अदिति का मतलब क्या है? Which is boundless. There's no boundary of Aditi. What is the meaning of Aditi? Look at the meaning of Aditi. Unbound. इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. So शिवा से एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, and Brahma is using that energy to create gods. Okay, so that energy was created, right? Brahma took little bit of that energy, created Daksha. Okay, created Daksha. Now Daksha has that energy in him, the Aditi energy. Okay, so if he is from the DNA and the lineage of Aditi, right? Now he gives birth to a daughter. And Pavanji is very correct. So the Aditi which is born is one of the Rupas of Aditi, not the Aditi, which is the Shakti Rupa of Aditi. Am I clear? Is born as a Shakti Rupa of Aditi. So the Veda says that Daksha was born out of the Aditi and Aditi was born out of the Daksha. Anyone जिसको यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो? एक सेकंड रिपीट कर देंगे प्लीज. नहीं. मैं नहीं करूंगा. कौन करेगा रिपीट? Who will repeat it? Okay, I'll repeat it again. Don't worry. See, what happens is, oh, Aditi is writing, Aditi Mittal. We have Aditi here. Aditi, why don't you explain? We're talking about you. सर मुझे अभी तक सिर्फ इतना पता था अपने नाम से कि अदिति इज मदर ऑफ ऑल गॉड्स. इतना डिटेल में मैंने कभी पता ही नहीं किया कि आज पता लग गया ना. आप सभी प्रणाम करो इनको. But what I wrote was that from your explanation, what I understand is that both Daksha and Aditi are made up of same energy that we are talking about. तो शक्ति है, उसी के दोनों रूप है. देखो डॉक्टर श्रुति, मेडिकल परिभाषा में आपको समझाता हूँ. मेरा एक डीएनए है और आरएनए है, ठीक है. मेरा एक लीनिएज है और मेरे ब्रह्मा मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे दिया. ओके, उन्होंने कुछ एनर्जी फेच की, मेरे अंदर डाल दी. मेरे जो बच्चे हैं, वो उसी लीनिएज के होंगे ना. वो डीएनए वो आरएनए वहीं से आएगा. अगर मैं ए मेटल से बनाऊं और ए मेटल में से थोड़ा सा मेटल निकालते हो, यहाँ रखते हो, वो भी ए मेटल ही होगा ना. That simple as that. If Daksha was born out of Aditi, so he will deliver Aditi. Is that simple as that? If you are born as a lion, you will deliver a lion. You will not deliver a monkey. Like begets like. You understand? So Brahma ji took a force which is, unbounded force Aditi, which is a form of an energy, right? He took that and he made all gods out of them. So Aditi became the mother of all the gods. That unbounded energy of the universe, that's Aditi. Yes, Yogi, you want to say something? We can say, sir, that the first Aditi was like the boundless, energy source, which is not like manifestation form. Daksha is the manifestation in the form of like more physicality, which Yes. Brahma created out of the Yes. unbound, boundless space and time. And then Yes. Daksha's, in his
line, Aditi was born as The one lineage, of the daughters. the Aditi was Yeah. born. And then Aditi is the goddess of all the 12 Adityas and everything. And then now Vishnu ji is sitting and Vishnu is saying that, okay, I'll take reincarnation in Raja Ram's Sharira. So he found that the nakshatra which is being headed by Aditi is Punarvasu. That's the first thing. He knows that he has that goddess energy in Aditi, and it is unbounding energy. जिसकी कोई boundary नहीं है. Okay? जिसकी कोई boundary नहीं है. Right? So, what are the qualities that you will get in Punarvasu people? The first quality that you will get in the Punarvasu people is they will have unimaginable, unending creativity, unending honesty, unending knowledge, right? The folds of the knowledge, one after the other fold, the other fold, the other fold, the other fold, the other fold. You open one fold, you'll find more knowledge. You open another fold, you find more knowledge. So if your ascendant, especially ascendant, or your moon, or your sun, or your Atma Karak, ATK, is in Aditi, you will have these qualities. If you have your ascendant, moon, sun, or Atma Karak. Because sun is somehow associated with Aditi, for sure. Right? Because all the 12 sun, the 12 mahine of the 12 rupas, the 12 Adityas, is basically from Aditi. Right? Atma Karak is a graha which has highest karmic settlement. And moon is the basically married to all the nakshatras. Right? So moon nakshatra is very, very important, and so is the ascendant degree when you were born. Right? So these 4 placements actually has equal results of Aditi, of the Punarvasu. Now, you have to understand what exactly was the life of Raja Ram, so that you can understand the life of people who were born in Punarvasu. Very, very simple. Let us first do Vivechan of Raja Ram's life. The first thing is 99.99% Punarvasu people are born in good families. Okay? They will be born in wealthy families. By wealthy, I do not mean money. Okay? Please do not misconcept wealth by dollars or rupees. Okay? By wealth, I mean the value system of the family. These people will be born in the value system. Do we have any Punarvasu people here? My Mars is in Punarvasu. My Atma Karak is in Punarvasu. Your My Atma son- Karak is Punarvasu? सर मेरे My सन का भी है. my son is in Punarvasu, sir. अपना आपका सन है पुनर्वसु में. Okay. And it's my 7th lord also, sir. Okay. सर you मेरे have- बेटे का भी है पुनर्वसु में. Sir, moon है. my son's moon is in Punarvasu. Son's moon is in. So he's born in Punarvasu, right? Yeah. Jupiter Okay. is in Punarvasu. Jupiter is in Punarvasu. My ascendant is in Punarvasu. Lot of people in Punarvasu. So Punarvasu nakshatra is one of the most auspicious nakshatras. Okay, very, very auspicious nakshatras. On the same time, it is a very dangerous nakshatra also. I'll tell you how. Right? So one minute. Yeah. Even my own Lagna is in Punarvasu. Fantastic. Right? So ascendant is in Punarvasu, right? Yeah. Yes, sir. Fantastic.
So it is a very, very good nakshatra, and it is a very, very bad in some, stages. So that is something you have to understand. Now, when I say it is very, very good, I'll tell you why. When I say it is very, very bad, I'll tell you why. You must understand. Before we go ahead and understand where it is good, where it is bad, first let's do the vivechan of the life of Raja Ram. Okay. According to me, the most important thing about Raja Ram was that his inner core, his inner core was very, very strong. How many of you will agree to that? Yes, sir. Yeah. When I say inner core, I mean that he is getting the mukut in the Raj Darbar in the morning. He's going to become the Raja, and he gets 14 years of exile, and his father is crying and begging that don't go. He just left. Can you believe the amount of inner core? कि जाना है तो जाना है, करना है तो करना है. That's the first thing. The second thing here is that they are people who are conscious of the society. आप राजा राम की पूरी जिंदगी देख लीजिए, उनको 24 घंटे यही फील हुआ कि मेरी प्रजा या लोग क्या कहेंगे. जितने भी लोग पुनर्वसु में पैदा होते हैं वो सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं. Whenever they are doing anything, they are conscious or they keep in mind the society कि उनसे कोई समाज का या किसी का बुरा ना हो जाए. किसी का बुरा नहीं होना चाहिए. You talk about people born in आद्रा और कृतिका, वो ये कह सकते हैं कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं ये ठीक कर रहा हूं या ठीक कर रही हूं और मैं करूंगा. वो सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे. लेकिन पुनर्वसु वाले सही को सही बोलेंगे, गलत को वो गलत नहीं कहेंगे, उसका मत सुनेंगे कि वो गलत क्यों कह रहा है. They will go deep. Look at Raja Ram. Look at Raja Ram. उन्होंने अगर कभी भी लाइफ में कोई फैसला भी करवाया होगा तो उसने दोनों पक्ष सुन के करवाया. उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को सुन के डिसीजन नहीं लिया. एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पुनर्वसु इज, यहां पर 3 प्लैनेट्स इन्वॉल्व है पुनर्वसु के अंदर. पुनर्वसु की 3 पदाएं जेमिनी में है, जेमिनाई के अंदर है, और एक पदा जो है वो कैंसर में है. 1 pada is in Cancer. ये 3 नंबर राशि में, ये 4 नंबर राशि में. ये जो पदा है, जो 4 नंबर राशि में पदा है, ये वर्गोत्तम और पुष्कर पदा है. ये वर्गोत्तम भी है पदा और ये पुष्कर पदा भी है. और इसकी जो लास्ट पदा है वो भी वर्गोत्तम पदा है. ओके. इस पदा में कोई ग्रह आ जाए तो नवांश में सेम राशि में होगा, इस पदा में कोई ग्रह आ जाए तो नवांश में वो सेम राशि में होगा. वर्गोत्तम पदाएं हैं. ओके. अगर पुष्कर नवांश किसी को समझ में नहीं आता, मेरी और योगी जी की वीडियो है 25-28 मिनट की, बहुत सिंपल वे में मैंने पुष्कर नवांश समझाया. उसमें आप जाके देख लीजिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी. राइट. पुष्कर जी हमने योगी जी की है ना पुष्कर पे वीडियो, तो वो आप जाके देख सकते हैं. वी हैव इट ऑन यूट्यूब. ओके. सो वी विल टेक दिस सम अदर डे कि वर्गोत्तम
नवांश क्या है, पुष्कर नवांश क्या है, तो ये पदाएं हैं इसकी। 4 में से 2 पदाएं जो है वो वर्गोत्तम पदाएं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है राजा राम का यहाँ पर जन्म लेने का। और अगर आपका इन चारों पदाओं में से पुष्कर या वर्गोत्तम नवांश में जन्म होता है, या आपका असेंडेंट या कोई भी ग्रह इसमें आता है, तो उसका रिजल्ट फिक्स होगा और 100% होगा। याद रखिएगा। यहां पर अगर पुनर्वसु की तीसरी और चौथी पदा में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो बहुत पावरफुल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड पदा ऑफ पुनर्वसु। Am I clear on this or not? Yes, no, maybe. Yes, sir. Right? Yes, sir. I can go ahead. Yes, sir. Okay. Very simple. Very clear at the moment. Okay. Sir, Now- Ram ji was born in which pada? Pada 4. Pada 4. So even mine is in Pada 4. Yes. अगर कोई कैंसर लगन का या कैंसर किसी का लगन है और वो पुनर्वसु में उसका असेंडेंट है तो वो पदा 4 ही होगी, क्योंकि कैंसर की में ही लास्ट पदा आती है। लास्ट है 3 जेमिनी में है, फर्स्ट जी 3. जी समझ गए ना आप? ठीक है ना? सो राजा राम was born in the 4th pada, which was also the पुष्कर पदा and the नवांश पदा. ओके? अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो पुष्कर और या जो वर्गोत्तम पदाएं हैं वो भी 159 ही होती हैं। ओके? हमेशा 159 ही चलती हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 159 पुष्कर पदाएं या वर्गोत्तम पदाएं 159 कैसी चलती हैं? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? नहीं सर। नो सर। What is the No, repeat sir. question? I missed. त्रिकोण के स्वामी। जो वर्गोत्तम पदाएं होती है वो भी 159 ही होती हैं। डू यू नो दीज थिंग्स? राइट? हाउ? आई टेल यू व्हाई। सपोज यू हैव दिस फर्स्ट मेष राशि। ओके? इन द मेष राशि you have how many padas? 9. 9 padas. 3 degree 20 minutes each. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 padas. So यहां पर मेष राशि में पहला नक्षत्र होगा, पहले नक्षत्र की 4 पदाएं अश्विनी की होंगी, फिर अगली 4 पदाएं भरणी की और 1 पदा कृतिका की। ठीक है? इसमें जो पहली पदा होगी, ठीक है, वो पदा वर्गोत्तम पदा होगी। उसमें कोई भी ग्रह आ गया तो वो ग्रह नवांश में सेम राशि में होगा। अगर इसके बाद हम दूसरा वृषभ ले लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर राशि, ठीक है, 2 नंबर राशि में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पदाएं होंगी। ठीक है? इसमें कौन कौन सी होंगी? पहली 3 पदाएं किसकी होंगी? कृतिका की। कृतिका के। उसके बाद अगली 4 पदाएं किसकी होंगी? रोहिणी। रोहिणी की। ठीक मृगशिरा है? के 2 हो गए। मृगशिरा। और मृगशिरा की 2 होंगी। यस सर। तो इस राशि में जो 5वीं पदा होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5th पदा होगी ये वर्गोत्तम पदा होगी। ओके? और जो तीसरी नंबर की अगर मान लो अब आ लेते हैं हम राशि, तीसरी नंबर की राशि में यहां पर भी 9 पदाएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है? यहाँ पर 3 नंबर में कौन कौन से नक्षत्र होंगे? सबसे पहले मृगशिरा की 2, Correct. उसके बाद अगली 4 आद्रा। आद्रा की, और लास्ट की जो 3 है वो किसकी? 3 है। पुनर्वसु। तो इसमें जो 9th पदा होगी वो आपकी वर्गोत्तम पदा होगी। ठीक है? सो पहली
वाले में फर्स्ट, दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में 9 एंड दिस सर्कल विल गो ऑन। इसके बाद आपका 4 नंबर आया तो 4 नंबर की पहली पदा वर्गोत्तम, फिर 5 नंबर राशि की 5th पदा और 6 नंबर राशि की 9th पदा। अगेन 1 5 9। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes, sir. राइट Yes, sir. और वो क्यों Yes. होंगी? और वो क्यों होंगी? क्योंकि फर्स्ट पदा बिलोंग्स टू ब्रह्मा, द 5th पदा बिलोंग्स टू विष्णु, द 9th pada belongs to Shiva. And again ब्रह्मा विष्णु शिवा। और अगर कोई ग्रह ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदा में आ गया वो फिक्स्ड है, वो फाइनल है, वो वर्गोत्तम है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ वर्गोत्तम। Why these padas are वर्गोत्तम? क्योंकि ये ग्रह भगवान विष्णु या शिवा या ब्रह्मा जी की कृपा से आया है, उनकी कृपा से आया है उस वर्गोत्तम में, और वो परमानेंट रिजल्ट ही देगा। एनी कंफ्यूजन्स? सर ये नॉलेज कहीं बुक में मिलेगा ही नहीं कभी। फैंटास्टिक। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सॉरी पर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये पता कौन बोल रहे हैं? ये नीम करोली बाबा जी। ये उनकी आशीर्वाद से मुझे ये नॉलेज आया है। उनका अगर आशीर्वाद नहीं हो तो आप ये नहीं समझ पाएंगे इतने डीपली। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Sir, Vargottam doesn't always necessarily means it will be beneficial or not necessarily, but then it is fixed. चाहे अच्छा है तो फिक्स्ड है, बुरा है तो फिक्स्ड है। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। मुंह धोना है मुंह धो लो, नहाना है नहा लो, दोबारा पूछ लो। अभी बह रहा हूं तो नहा भी सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं, छींटा भी दे सकते हैं। नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, नहा लीजिए। आई कैन रिपीट, नो प्रॉब्लम। सर इसमें एक चीज समझ नहीं आई मुझे कि why only 159? Why not 236? That is so fantastic because you know when Brahma ji was making the horoscope, he was the creator. Okay, he said let me create the lagna of the person. So what he did was, Okay, got it already. you know he actually took the control of the first house, right? So this first became Brahma, right? Now he wanted operation Vishnu, Mahesh, right? 1 2 3 4 is Brahma, 5 is Vishnu, 6 is Mahesh. Okay, again 7 is Brahma, 8 is Vishnu, 9 is Mahesh. So 10th is Brahma, 11th is Vishnu, and 12th is Mahesh. Out of which, when the horoscope is made, first of all the 9th house is made. Adra, Shiva, he is doing the creation through Brahma, and Vishnu ji is making your future. 1 5 9 सबसे पहले भरा जाता है, उसके बाद सारे योग कारक मारक ग्रह कुंडी के भरे जाते हैं। So 1 is Brahma, 5 is Vishnu, and 9 is Mahesh. So they wanted to discuss the Vargottam padas. तो जब उन्होंने यहाँ पर 9 के 9 पदाएं बिठाई सभी नक्षत्रों की, तो पहली पदा पहले राशि में, 5वीं पदा दूसरी राशि की, 9वीं पदा तीसरी राशि की वर्गोत्तम होनी ही थी, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पदाएं हैं। And so on it will carry and these become Vargottam padas. और इनमें अगर कोई ग्रह आएगा तो आंखें बंद करके कह दीजिएगा कि नवांश में भी वो उसी ही साइन में होगा। Right, okay. यस सर, मैंने अभी चेक किया है अपने सन का ना। क्या तो बात है। पदा में है सर, तो नवांश में भी वो 4 नंबर राशि मतलब उसी में ही है। जय हो।
ये तो कमाल ही हो गया, नहीं? यस सर, ये तो अभी कमाल ही तक हो मैंने गया। नहीं देखा था सर, अभी जस्ट आपने बताया तो मैंने चेक किया। तो मेरा काम आपको रास्ता ही दिखाना है, आप चलेंगे तो खुद ही ना, गुरु का काम रास्ता दिखाना है केवल। Yes, exactly. Exactly. तो इस तरह से जो है वर्गोत्तम सीखा जाता है। वर्गोत्तम में क्या यूट्यूब पे बोलते हैं जी उसको हो गया सेम रिजल्ट, ऐसे नहीं होता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम को ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी रखकर आपको वर्गोत्तम बनाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपका कोई ग्रह 1 नंबर राशि में वर्गोत्तम, उसके साक्षी ब्रह्मा जी हैं। अगर 2 नंबर राशि में वर्गोत्तम, उसके साक्षी विष्णु जी हैं। और अगर 3 नंबर में कोई वर्गोत्तम है तो उसके साक्षी कौन है? शिवा। अब आपको एक मजे की बात बताओ, मेरी कुंडली में मेरे सूर्य देवता पुनर्वसु में वर्गोत्तम है, दी 3rd pada, which is also my 5th lord. So that means the Jyotish, the mantra shastra, the skill is directly coming from Surya Devta. Shiva. Shiva. It's directly coming from Shiva. Shiva. Yes, no, maybe? The सर fifth अगर lord नौमांश में भी अगर नौमांश में भी अगर कोई प्लेनेट अगर इसमें जाता है, पुनर्वसु में जाता है जी, तो उसका इफेक्ट मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, 1 second. फिफ्थ लॉर्ड हुए तो विष्णु हुए ना? अरे अरे रुक जाइए देवी जी, तभी तो दिखा रहा हूँ चार्ट। विष्णु विष्णु क्या बोल रहे? ये देखिए, ये कुंडली है। हाँ जी। इसमें सूर्य देवता जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में 3रे चरण में आए, 3री पदा, ठीक है। 26 डिग्री 43 मिनट पे 3री पदा शुरू हो गई ना? यस सर। हो गई कि नहीं हो गई? हुई कि नहीं हुई? जस्ट एंटर्ड 3rd पदा, इट इज क्लियर? यस सर। ये वर्गोत्तम पदा है, इसीलिए सूर्य यहाँ पे 3 नंबर राशि में और यहाँ पे भी 3 नंबर राशि में। ये वर्गोत्तम हो गया ना नवांश के अंदर। यस सर। अब ये मेरा 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है मेरी कुंडली के अंदर। 5th किस चीज का घर है? स्किल का, क्रिएशन का, क्रिएटिविटी, मंत्र शास्त्र का, मंत्र शास्त्र, ठीक है, चिल्ड्रन, ज्योतिष, प्योरिटी, लक्ष्मी स्थान। इट इज गॉन वर्गोत्तम इन दी 9th पदा, इन दी 9th पदा। टेक्निकली ये पुनर्वसु की 3री है, लेकिन जेमिनाई की तो ये 9th पदा है ना? यस सर। और 9th पदा किसके हाथ में है? शिवा। 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 So first pada is Brahma, second pada is Vishnu, you know, which is the 5th pada is Vishnu, and the 9th pada is Shiva. Right? So this Surya Devata in the house of communication and in the house of purity of giving knowledge is coming from where? It's coming from Shiva. And he said it is Vargottam, that it is fixed, that you are born and you will do these things in your life. It is absolutely fixed. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes. Sir, Yes. my son Kundalini was son in Punarvasu, 4 pada, sir. Fantastic. It is fantastic. It is First is it is a 10th Pushkar also. house, sir. It is the Pushkar also. Sir. And it is, you know, Sir. 10th house, you know, Punarvasu make people, and it is 10th house. What lagna is your son? Sir, Brushik lagna, sir. 8 number. 8 number, sir. And your Surya is the Devta of what? Sir, 5th house, sir. It's sir, 10th house, sir. And he's gone in the 8th house?
सर नवांश में सर Forget about Naman. लगन में है सर. E1. In the Lagna, it Sir. is in the 8th house, right? No, in the Lagna. No sir, no sir, 9th house. 9th house. Sir. It's in the 9th house. 4 नंबर इधर लिखा है ना, तो इसके यहाँ पर Sir, आ गए sir. सूर्य देवता. Sir. Yeah. It is a good placement, but the only problem is that it is sitting 12th from itself. Sir. So that is the only concern, which I'll tell you how we can, इसको फलित कैसे करना है. बट वो अपने से 12वें में बैठे हैं, सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है. Sir, one question. I almost got it, but slightly I'm trying to look at my chart and see. Aquarius, Venus is at 4 degree 29 in Dhanishta at 4th pada. And वो नवमसा में वर्गोत्तम है, but I'm trying to calculate the way you taught me now. So I think you're using the wrong software because आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? Sir, Parasharalit. उसमें 159 में ही आती हैं सारी पदाएं, या तो 1 में आएगी या 5 होगी या 9th होगी. वो जो आपकी कौन सी है धनिष्ठा में, कौन सी पदा में है वो? It is showing 4th. सर धनिष्ठा की 4th पदा है ना? हाँ. लेकिन वो कैप्रिकॉर्न राशि की तो 4th पदा नहीं है ना? नहीं. No. Correct. वो कैप्रिकॉर्न राशि की बताइए मुझे कौन सी पदा है वो? राशि के हिसाब से. What is the degree? Tell me, what is the degree of solar 4 degree? 4 degree 29 minutes. Venus is showing. हाँ. सर धनिष्ठा की 4th पदा जो है एक्वेरियस में आएगी. Aquarius है, right? आएगी ना? आप कैप्रिकॉर्न बोले, एक्वेरियस में आई ना 4th पदा? नहीं, Aquarius, yeah. हाँ, तो उसकी वो पहली पदा ही बनी. Yes. 4 degree will be second pada, na? Second pada. Because 3 degree 20 minutes. Yeah. Second pada. Second pada. आप ये वाला जो आपका चार्ट है ना, आप उसमें ग्रुप में डालना, विल सर्च इट देयर. ओके, ठीक है ना? ठीक है, पुट इट इन द ग्रुप. आपका वैसे मैंने कंसल्टेशन दिया हुआ है ना? हाँ सर, हाँ. एक मिनट, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो जरा. 12 Feb 1970. 1854. Mumbai. Yeah. तो आपका वीनस वर्गोत्तम कहाँ है सर? Sir, in Navamsha also D9 में it is in Venus, na? In same. कहाँ है सर? It is not in the same राशि. It is not वर्गोत्तम. Bhavatam. भाव वर्गोत्तम. भाव वर्गोत्तम is a different thing. Okay. Got it. It is not वर्गोत्तम. तो मैं वही देखा ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता. Yes. Sure. Right? तो ये हमारा कैलकुलेशन, it is not वर्गोत्तम. It is भाव वर्गोत्तम. It's a lower category of वर्गोत्तम. Okay. It is not वर्गोत्तम. Okay? ठीक है. All right, good. Okay. So, so this is वर्गोत्तम in the 9th pada. Okay? So यहाँ तक सबको क्लियर है? वर्गोत्तम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और यहाँ पर आपकी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर why राजा राम took was because इनकी 2 पदाएं, एक वर्गोत्तम पदा है राशि की और एक पुष्कर और वर्गोत्तम दोनों पदा है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं पुनर्वसु के बारे में. The most important thing that I like about Raja Ram's life is he is one incarnation of Vishnu where he can compromise with anything in life. Isn't? He compromised with everything that he's got. You give him the Raj,
he'll take the Raj, he'll become a Raja. You give him the exile, he'll take the exile. You give him good food to eat, he'll take that. If Shabri wants to give a food, वो भी जूठा खाना, वो भी ले लेंगे वो. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Especially, you know, compromising कैटेगरी होती है. लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रह आ गया जो कि एक खराब ग्रह है, वो पुनर्वसु में आ गया या मारक ग्रह है, तो ऐसे लोग जिंदगी में बार 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 रिपीटेडली कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. Every coin, right? You know, for me, just like, you know, somebody has said, in fact Gauri has said it probably, her 7th lord is in Punarvasu. Yes, sir. You know, 7th lord in Punarvasu is a repetition of struggleful partnership of life. You know, it is a struggleful married life, and it's a repetition of these struggles, one after the other, and whole life. So for such people, I just give them one remedy कि आप इसकी आदत डालो, आप अपनी जिंदगी जीनी शुरू करो, आप इसको, because what is Punarvasu? Punarvasu is repeat, is repetition of the thing. Punar is repeat. You know, you're repeating things, right? Keep repeating. Okay, like the arrow. उसका जो धनुष, you know, this is the, you know, तो ये पुनर्वसु का चिन्ह है. This is how Punarvasu is represented by a bow and arrow. तो राजा राम के तीर क्या करते थे? जाते थे, वहां पर नुकसान करते थे और वापस उनके इसमें आके पड़ जाते थे, पनीर में. You know, this is what Punarvasu is, right? So the bow is going, doing the job, coming back. So going and coming back to home, coming back to pavilion. So if this is Vishnu ji and this is Raja Ram, this is the arrow. I'm pointing to Raja Ram. Raja Ram did his job, killed Ravana, came back to Vishnu ji, back to home. This is what Raja Ram did. And Lakshmi ji was Ma Sita. Ma Sita was nobody else but Ma Lakshmi, and did the same. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Going, coming back, going, coming back. For this was a short travel of Vishnu ji in a body. This was what? A short travel. This is the only reason that the third house is the house in the Kalpurush Kundli for a short travels. Oh yeah. Am I making some sense to all of you? Yes, sir. Whole my life, दिमाग की बत्ती जल गई. whole my life, I was not able to understand why third house is a house of a short travel. And I realized this is because of the Punarvasu Nakshatra. Because Vishnu ji, the 8th incarnation of Raja Ram, went there, came back, you know, like an arrow, did his job and came back. It's a short travel for him. This is not a long travel at all.
इवन जो राजा राम जी के तीर थे, श्री राम जी के तीर थे, वो भी ट्रेवल करते थे और अपना काम करके वापस अगेन रीलोड हो जाते थे, बैक टू होम. So people born in the Punarvasu Nakshatra, whenever they go for a job, for a work, they will always like to come back home. They would not like to stay longer at anybody's place. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उनका यही होता है कि घर कब आए. When should we come back home? What did Raja Ram do? Raja Ram went to 14 years of exile and came back. The wife was taken away, came back. So यहां से हमें एक और ऑब्जर्वेशन नजर आती है, और वो ऑब्जर्वेशन है कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों का सेकंड अटेम्प्ट ही जो है वो हमेशा सक्सेसफुल होगा. The second attempt that they'll do. Punarvasu Nakshatra are the people, they are like that magical ball होती है ना जो bounce back करती है. आप इनको जीरो कर दो, ये फिर बाउंस करेंगे उतने जबरदस्त तरीके से ऊपर. They will bounce back. They will bounce back. This is what Raja Ram did whole his life. He bounced back from whatever situation that has been given to him. You brought him to zero, he became a hero. You brought him to zero, he became a hero. That is why I keep saying, Neeraj Gandhi ji, that the things will bounce back, because there are Punarvasu Nakshatras, these Nakshatras bounce back. They will restart things all over again from zero to a hero, because the more powerfully you will bounce back, the more powerfully they will go up, just like a tennis ball or a magical ball. जितनी जोर से आप इसको मारोगे उतनी जोर से वो ऊपर जाएगी. This is life of Raja Ram. Second attempt is always very, very powerful. Yes. Because in the first attempt you faced failure. Just to overcome that failure, you do more hard work, and then obviously it is not for everyone. It is only for the people born in Punarvasu. Take my words. It is not for every nakshatra. No. Only for Punarvasu. Sir, I would like to add something. Yes, please. यहाँ पर जैसे पुनर्वसु है तो वो साइन उसका जो जेमिनाई है, जेमिनाई यानी कि बुध की जो राशि है वो है. तो बुध मरकरी, जिसको हम पारा भी बोलते हैं, चाहे वो मरकरी असेंडेंट हो, मतलब जेमिनाई असेंडेंट हो, या फिर कोई भी प्लैनेट जेमिनाई में हो, या फिर पर्टिकुलरली पुनर्वसु हो. तो जैसे मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, तो उसके चाहे जितने भी पीसेस हो जाएं, चाहे वो फाइनली वो इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर उस बिखरने का कोई भी इफेक्ट नहीं आता. That's it. समझ रहे आप मेरी बात? आप जीवन में that means you break up and then again you gather up your courage to bounce back. No. You don't need a courage for it. You will automatically bounce back. Automatically. You don't need courage for it. It is inherent ability of number 3. It is there within you. Okay. ये आपको कहीं से सीखना नहीं पड़ेगा, ये आपके अंदर है. Already you have it. Okay. You don't need it. Guruji, I missed that third point. The third step when you said the third house. So first was birth of Vishnu to Ram. This was the first one, and then it was the second one, the slaying of Ravana, and the third one was the return. Yeah, I didn't get your question. Okay, I missed that. Okay, all right. No issues. So, what I'm trying to tell you here is that to understand a nakshatra, one has to understand the traits of Raja Ram.
right? And you know what? These people are extremely forgiving people. राजा राम की पत्नी उठा के ले गए रावण, और रावण जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, राइट? और उसको उस समय भी राजा राम कह रहे हैं, भाई अभी भी हमारी दुश्मनी खत्म, अभी भी हमारी दुश्मनी खत्म, तू मेरी पत्नी वापस कर दे, मैं तेरी जान बख्श देता हूं, गो होम, मुझे तेरा राज्य नहीं चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पुनर्वसु। मैं अपने जीवन में एंड तक किसी पे अटैक नहीं करता। मेरा आत्मा कारक सूर्य पुनर्वसु में है, और पुनर्वसु का जो सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग सूर्य होता है, बहुत स्ट्रांग। मैं 99.99% फॉरगिविंग होता हूं, और जहां तक मैंने नीरज गांधी जी की कुंडली को देखा है, ये भी फॉरगिविंग है, ये भी अपने एनिमीज को लास्ट तक कह रहे हैं, लेट इट गो, लेट इट गो, यू लिव योर लाइफ, आई विल लिव माई लाइफ, राइट? I am going to forgive you for everything you have done. Let's start. Let's renew it. Which is Punarvasu, renewing things. Repeated. जब आप repeat करते हो तो आप renew करते हो उस चीज को, right? So this is what is with the beauty of the Punarvasu. Sir, but I don't know why the thing which I am fighting for, I'm not able to forgive those people. I'm not able to. See, eventually राजा राम डिड नॉट, बिकॉज जब राजा राम जी के सिर से पानी ऊपर बह गया, जब उनको लगा कि अब ये नहीं मानेगा, तो वध तो उन्होंने कर ही दिया ना। फिर वध तो यही पुनर्वसु की स्पेशलिटी है। देखो ये जो तीर है ना, ये तीर भी लोड किस तरह से होता है? लोड होता है, पहले ये पीछे जाता है, फिर ये आगे जाता है, राइट? दिस इज द स्टोरी ऑफ पुनर्वसु, कि वो पहले उनको कोई पीछे करेगा ही करेगा, उनको कोई जीरो करेगा ही करेगा, और फिर वो खींच के आगे आएंगे। आप मेरी बात समझिए। एक बो एंड एरो की स्टोरी क्या है? बो एंड एरो की स्टोरी है, द एरो विल बी स्ट्रेस्ड बिहाइंड, सो दैट द प्रेशर कैन बी क्रिएटेड एंड गो अहेड। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों को जब तक कोई खींचेगा नहीं, तब तक वो अटैक ही नहीं करेंगे, और एंड तक यहां पर रुके भी रहेंगे निशाना साधने से पहले। दे आर स्टिल स्टेइंग, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं है तो एक स्ट्रिंग ही छोड़नी है, और वो छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट इज नवनीत चित्कारा। This is I've done. This is how I bounced back in my life. जिसने मुझे जितनी जोर से गिराया, हम उतनी जोर से आगे बढ़े। अगर कोई कहता है कि मेरे को कोई कभी जिंदगी में पहली बार कमेंट आया जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि आपकी वीडियो में ये सब आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे कुछ लोकल एस्ट्रोलॉजर्स ने धमकियां देनी शुरू कर दी कि आप तो हमारा व्यापार खत्म कर देंगे, आप तो उपायों से दूर लेके जा रहे हैं, आप सोल्यूशन दे रहे हैं। तो जिस दिन मुझे ये मैसेज आया, उस दिन मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा एक हफ्ते में कितनी वीडियो आती है हमारी? बोले पापा 1 या 2 आती है। मैंने कल से 1 हफ्ते में 12-15 वीडियो डालो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, उनको पागल कर दो वीडियो से, इतनी वीडियोस डालेंगे, ठीक है? 350-400 वीडियो डाल देंगे हम, बाउंस बैक। दिस इज पुनर्वसु। आप जो है इनको आप खींच नहीं सकते। अगर आप इनको खींचोगे, राजा राम ने कितना फॉरगिविंग किया, जाने दो जाने दो जाने दो, बट इफ यू नॉट एग्रीइंग, तो एक जो एम है पुनर्वसु का, वो तो कंप्लीट होगा ही होगा, राइट? these people still in the last minute also they will still try to patch up. एक और क्वालिटी होती है पुनर्वसु की, they'll try to patch up, राइट? फिर भी वो एंड में ना उनकी कॉन्शियस कहती है कि चलो पैचअप कर लेते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको एक चीज बताऊं, 100% श्योर है ये चीज, if someone has a good planet in Punarvasu, and Sujata ji, this is for you, okay? So this is for your son, okay? If someone has a good planet in Punarvasu, that person will never face poverty. That is there. Never.
कभी जिंदगी में सड़क पे नहीं आएगा, कभी घर नहीं बिकता, कभी कुछ नहीं होता. They will bounce back. They will bounce back. नीरज गांधी जी, आपको अब मेरी बातें समझ में आ Yes, रही sir. होंगी जब मैं Yes, आपको sir. कुछ कहता हूं. Yes, sir. बिकॉज कुछ टेक्निकलिटीज चीजें मैं नहीं समझा सकता कि मैं कैसे बोल रहा हूं. सर आज ऐसे फील हो रहा है as if you are not speaking, your guru is speaking through your mouth. He always speak. He always speak. अदिति I have tears in my अदिति से ही, eyes right now. अदिति वहीं से पैदा होती है और अदिति जो है वहीं से मेरे अंदर जो बोल रहा हूं वो मेरे गुरु ने मुझे दिया और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं. इट इज द सेम स्टोरी ऑफ दक्ष एंड अदिति. इट्स एग्जैक्टली द सेम. That's how it is. And you know what? Punarvasu people will always get support. उनको लोग हेल्प करने आ जाएंगे जब भी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे. टेल मी हाउ मेनी पीपल सपोर्ट राजा राम, श्री राम जी. Sorry, somebody want to say something? No, very true. Whatever you are explaining, really. It is true. छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए. आप ये देखो ना, रुद्रा वैदिक एकेडमी को हम जीवन में आगे लेके जा रहे हैं. आप देखिए मेरे पास मेरे 8-10 हीरे जुड़े हुए हैं. And they're taking my Rudra Vedic. See, these are, one of them is a Hanuman. Then there's a Lakshman is there. Everyone is there with me. They are ready to help. They are ready to help. Isn't? कितनी जल्दी पूरे यूनिवर्स को कवर करके हम टीम बना के आगे बढ़ रहे हैं. ये पुनर्वसु के बिना हो ही नहीं सकता था. बिकॉज पुनर्वसु के पास क्या है? सहयोग है. पुनर्वसु को सहयोग मिलेगा, नेचुरली मिलेगा. और लोग हनुमान जी की तरह सहयोग देंगे 100% विश्वास करके, और उनका विश्वास भी नहीं टूटेगा. और राजा राम की एक और एबिलिटी थी, वो हर प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे. चाहे वो वानर हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे असुर हो. जब विभीषण आया तो विभीषण को भी गले लगा लिया, राक्षस को भी गले लगाया, देवों को भी, वानरों को भी. वो किसी को जज नहीं करते थे अपने साथ जोड़ने से पहले. This is Punarvasu. They will not judge. They will go and eat the food with Shabri also. लेबर के साथ बैठ के एक थाली में खा लेंगे. आप ड्रिंक ले रहे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं अपना रूह अफ़ज़ा या लिम्का पी रहा हूं, आप ड्रिंक ले रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज पुनर्वसु. आप नॉन वेज खा रहे हैं अपने थाली में, मैं अपनी थाली में वेज खा रहा हूं, आपके साथ बैठ के खा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जूठा खाना दे रहे हैं राजा राम को, शबरी, ठीक है, थोड़ तोड़ के बेर टेस्ट कर करके दे रहे, वो उसको एंजॉय करके खा रहे. आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. नो जजमेंट. दिस इज पुनर्वसु. आप नॉनवेज नहीं खाते, पुनर्वसु वाले लोग फैमिली को खाना बना के दे देंगे नॉनवेज, चाहे आप उसको कभी टेस्ट भी ना कर सके. दिस इज पुनर्वसु. कॉम्प्रोमाइजिंग. जो है, जो जैसा खाता है खाने दो, जो जैसा पीता है पीने दो, मैं तो हूं ना उनके साथ. दिस इज राजा राम. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है, आप लोगों में से कितने लोग एग्री करेंगे कि राजा राम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया? Yes, very right, sir. Yes, sir. सर आज के टाइम पे तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड. दे आर लाइक द विक्टिम्स इन, बिकॉज दे आर सो इमोशनल. कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. एंड द युग दैट वी आर लिविंग इन इज completely like opposite of like I That is feel where it's the problem is, and very I contradicting. true, and that is what I have felt many times in my life. I have been taken for granted many times. Because just because of my So because nature. ये लोग बिल्कुल फाइट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर But then they fight, then they finish it off. that's the when you're at That the is what peak. Raja Ram is.
You know, they don't fight. They are taken for granted. You know, पहले you know के कई ने बोल दिया 14-year exile, taken for granted. हाँ, रावण उठा के ले गया, taken for granted. ठीक है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, taken for granted. सफरिंग तो रही ना, सफरिंग तो है ना, तभी तो मैं कहता हूँ कर्क लगन की जो कुंडली होती है, कर्क लगन के जो लोग हैं वो नेचुरली वो पुनर्वसु के होते हैं या उन पुनर्वसु लगन में होता है उनके, चाहे कोई ग्रह हो ना हो, एक स्ट्रगल तो रहती है लाइफ में. So are they considered self-sacrificing for good of others, or they don't cross that line? They self-sacrifice, yes. You Yeah. look at, I give you my example, right? 14 hours, 15 hours I'm working, Jyotish, classes, videos, consultations, right? Okay. If I would have been for the money, especially just for the money, not for the quality, I have promised 27 classes for Nakshatra. We have reached the 7th Nakshatra and 27 classes have already happened. Yes. We will make it 127 classes to cover 27 Nakshatras. You know, they are dying for the quality to give. They're trying to give it to others. दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो. अगर मैं आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ होता या आर्द्रा के अंदर मेरा चंद्र या सूर्य होता, मैं कहता जी देखो ये क्लासेस बहुत आगे बढ़ रही है, अब सारे 50-50 हजार रुपये और जमा करवा दो. ये तो सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, मेरे से गलती होगी. नो, आई कैन नॉट. पुनर्वसु विल नॉट आस्क. होल राजा राम sacrificed wife, sacrificed everything, sacrificed राज्य just for others, दूसरों के लिए. और अगर कोई दूसरों के लिए इतना कर रहा है तो उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड तो लिया जाएगा ही. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट टेकन फॉर ग्रांटेड के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. दैट इज द ऑस्पिशियसनेस ऑफ पुनर्वसु. Let them, you know, and crisis management. Take this word, write it on a piece of a paper, that if you marry someone or you have anyone in your life who has पुनर्वसु, उसको क्राइसिस को मैनेज करना आता है. लोग टूट जाते हैं क्राइसिस में, पुनर्वसु वाले टूटेंगे नहीं. They can cry, they can be in a very difficult situation, but they will not break. राजा राम टूटे? Did he break? No. आप क्राइसिस मैनेजमेंट राजा राम से ज्यादा किससे सीख सकते हो आप? The highest level of crisis management has come from where? It's come from Raja Ram. राजा राम से बड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट आपके लाइफ में कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाए, if you have one Punarvasu guy at your home, they will manage it. I agree, sir. They will manage it. They'll not give up. You know, my wife used to say always, Navneet Chitkara, you are one line is okay for you. Last man, last bullet. I will fight till I have a last man or I have a last bullet. I will not give up. So I'll share a personal story, Sure. sir. 2008, when the recession happened, so Shashank's got Punarvasu in Saturn, which is actually sitting in his Lagan. Wow. He was due to get a double promotion with a very good salary hike, everything. Recession happened. I had just quit working. My little one was only 2 months old, and he lost the job. Oh, okay. I was really scared because kids were so small, and we obviously didn't have savings. We married young. We had kids very early. And there's only one thing he said to me. He said, why are you so worried? Main hoon na. Yes. He says, kheti kar lenge, whatever we can. I'll take you through it, you know. He says, don't worry about it. Yeah. And that was one day, and today, 10 years on, life is different. Yes. Yeah. So it's very true. You can really depend on people with Punarvasu. 100% dependable people. 110%. Many times my life has given me setbacks and started from zero. I've always said, Nitika, फिर क्या यार, कुछ भी कर लेंगे, क्या टेंशन क्या है,
because we know that we have that quality inside, we have quality to bounce back. That perfection of knowledge is there. Don't you worry. कुछ तो बात है कि गिरती नहीं हस्ती हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है दौरे जमाना हमारा. Oh, so right, so कुछ तो बात है ना, कोशिश के बाद भी वो चीज गिरती नहीं है. तो वो जो बात है कि हमारी हस्ती नहीं गिरती है, वो पुनर्वसु ही है. राजा राम की कहाँ गिरी जब वो चले गए. आज भी और पुनर्वसु का मतलब क्या है? रिपीटिशन. तो इसीलिए विष्णु जी की एक ही इनकारनेशन है जिसको 2 बार कहा जाता है, राम 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 राम. ओके, दैट्स वन. Yes. और विष्णु जी को 3 बार विष्णु विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही इज ब्रह्मा हिमसेल्फ, ही इज विष्णु एंड ही इज महेश. So that is why when we say Vishnu, we say Vishnu, 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 and when we say Ram, 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 because Punarvasu repetition. So that's why you even don't want moksha and you want a reincarnation again and again. It's not okay. Vrinder is saying, yeah. Sir, just because your sun is in Punarvasu, so obviously sun in itself is a strong planet. It's my 5th lord. But if yes, and if someone has a moon in Punarvasu and let's say it is in a Dushtana house or 6th or 8th or 12th house, then is there a problem? Maybe they're emotionally weak or something, or it goes the same. They're also strong people. And first of all, you have to tell me it is in the Gemini Punarvasu or it is in the Cancer Punarvasu. Cancer Punarvasu. If it is in the here Cancer, only it is Virgo. So they'll be emotional about that particular thing. Whatever house it is. So they'll be very, very emotional. Like but enemy then is hurting them. Yeah, but then they will bounce back. They will have value system for that. Suppose it is in the 6th house. The diseases will come. Definitely, they'll win. The enemies will come. They'll win. The litigation will come. They'll win. Because उनको पीछे एक बार करना ही है. एक बार पीछे करेंगे, खींचेंगे, फिर वो आगे जाएंगे एकदम से. That's the beauty of the bow and the arrow. So, never give up. और विपरीत राजयोग भी लगेगा ना सर उसमें, अगर 6, 8 और केवल में रहेंगे तो बिल्कुल लगेगा जी. विपरीत राजयोग भी लगेगा. और राजा राम जी के पास विपरीत राजयोग भी जो है वो राजा राम की शक्ति है ना, विकट स्थितियों से वापस आके आगे बढ़ना. They will not give up. आप उनको जमीन पे मारो, उनको पांव से रगड़ के 0 कर दो, फिर वो उठेंगे, बोलेंगे हाँ जी दसो, चक दांगे फटे. नो प्रॉब्लम. असेंडेंट हो तो अरे बहुत शानदार है. आप है ना, कभी हार मानी है? बोलो, कभी हार मानी है क्या? तभी तो मुझे आपसे डर लगता है. आपने बोला जी आप हनुमान चालीसा करना जी, ठीक है ना, आप हार नहीं मानोगे. आप यू विल रिपीट. मैं एग्रेसिव नहीं हो सकती हूँ. मैडम आपने क्या लिखा आज? वो एग्रेसिव तो चलो, मैं वो एग्रेसिवनेस मेरे पे छोड़ दो, वो मेरा कोटा है, ठीक है. आपकी जो स्टेटमेंट है वो पुनर्वसु की स्टेटमेंट होती है. व्हाट डिड यू राइट? यू राइट एवरीवन विल लिसन दिस 3 times. Yes, she did that. Right? Repeat 3 times. I said Jai Ho Punarvasu, Jai Ho. So you ask me to repeat things. What do I say all the time? You go home, just listen to this video again and again, repeat it 2-3 times. This is Punarvasu energy. On the serious note, this is Punarvasu energy. My brother-in-law. Sir, a question. One second, let Brinder speak. One second, yes. I'm okay. I'm okay. So my brother-in-law has, Jupiter in Punarvasu, and he took consultation from you also. और sir, उनके साथ same situation, and I was like, oh God, ये बंदा इतना positive कैसे हो सकता है, इतने negative उसमें. मतलब मैं तो थोड़ा सा negative हो जाऊँ तो negative, और वो तो, और अच्छा देखो सर, उनका लगन लॉर्ड 8th हाउस में है. सडनली जॉब जाएगी, सडनली जॉब मिल जाएगी. ऐसे ही होता है. ऐसे लोग ना प्रोफेशनली बड़ा स्ट्रगल करते हैं. उनकी जिंदगी हर 3-4 साल में बदली होती है. Similar, same. राजा राम देखो ना, स्टूडेंट, राजा, एग्जाइल, फाइटिंग, वॉरियर, राजा, coming back. Every 5-7 years the life is changing, the profession is changing. Yes sir. Just like you said sir, कि वो बंदा गिरेगा, 100 बंदे से मार खाएगा. हाँ भाई, उन 10 की करना के
वो that kind of personality. Yes, कि it मतलब वो is. घबराना तो है ही नहीं ना, कोई एक आधा फोबिया डिक्शनरी में ही नहीं है, वो नहीं है, सेम सर, सेम होगा ही नहीं डिक्शनरी में। और इसीलिए आप लोगों में से कितने लोगों को मेरा मैसेज आया कि मैं हूं ना? बोलो सर। मेरे को, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। यस सर, आप हमेशा कहते हो। आई नो कि मैं कुदरत से लेके दे दूंगा आपको। आई विल गिव इट टू यू, डोंट यू वरी, आई एम देयर। सर मेरा बेटा ना 12 साल का ही है अभी, वो पुनर्वसु में 4th पदा में है सर, उसका जो मून है सर जी। और वो सब मैनेज करता है सर, जो आप बोल रहे हो ना, वो 12 साल की उम्र में ही सब कुछ मैनेज करता है सर जी। तो बड़ा मतलब जैसे कि नहीं नहीं ये सब हो जाएगा मम्मा, मैं कर लूंगा अपने आप चिंता ना करो इस चीज की, मैं हूं ना। मैं वो जी, मुझे कहता है मैं हूं ना। अब आप ये देखिए रचित जी की कुंडली में उनका आत्मा कारक जो है वो पुनर्वसु में है। आत्मा कारक पुनर्वसु का इंसान जिंदगी में विकट से विकट स्थितियों में अपना रास्ता बना ही लेगा। हम 100% होते हैं ऐसी कुंडली को लेकर कि कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान घबरा रहा है क्योंकि चीजें उसके साथ बीत रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी थिंग, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। रचित जी, यू देयर? Yes, sir. Thank you so much, sir, for your blessing, sir. It is just a temporary. You're gonna bounce back in a way that you would have not imagined yourself because you are Punarvasu Atmakarak. Yes, I have gone through very tough times professionally, and as you mentioned, a lot of crises in the profession, which I did manage. So, yeah. So hopefully, I think better time should come. You will bounce back. So what should these people do as a remedy? Like, I have he's agreeing. Like, I have a complete lecture on remedy. Right. So the complete set of remedies will be discussed. The one remedy I can give you right now, since you have asked, is just keep saying Ram, 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 24/7. And you know what? एक चीज और बताओ, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जितने भी लोग पैदा होते हैं, somehow उनकी जिंदगी में राम जरूर एसोसिएटेड होते हैं और उनके रिलेशन में कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है जिसका नाम आर से शुरू होता है। the entire family, मतलब बच्चों से लेके पता नहीं क्या क्या कनेक्शन निकल रहे हैं, मतलब दिस इज क्रेजी। सर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। अभी नॉर्मली आई नेवर मेक माई किड्स सिट विद मी बिकॉज वो मुझे बहुत तंग करते हैं। आज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय सन, उसका नाम रायन है, अगेन दिस आर थिंग, एंड वी हैव सम रुद्रा। I asked him to please sit with me. मैं एक काम करूंगी, तुम्हें पढ़ाने बिठा देती हूँ, मुझे पता है वो नहीं पढ़ता, फिर भी कि you come and sit with me and just sit with me and keep studying. Sir, and he is a Punarvasu moon. मतलब जिंदगी में मैंने उसे अभी तक कभी नहीं अपने पास बिठाया। आज मुझे नहीं पता था ये लेक्चर होने वाला है, and imagine I have a Punarvasu sitting with me. He's troubling me, whatever it may be, but and right now the nakshatra is Punarvasu. Exactly, which is going on is Punarvasu. Some crazy coincidence this is. अभी पुनर्वसु चल रहा है। जी जी जी। और कभी-कभी ऐसा लगता है ये क्लास 6 घंटे 8 घंटे चलती ही रहे, खत्म ही ना होए। मेरे पास इतनी चीजें अभी और बात करने की आप लोगों के साथ। Amazing, sir. This is great. Sir, I have a question. Yes, please. सर अगर किसी का वीनस पुनर्वसु में हो और पदा 3 9th हाउस में हो एंड लिब्रा लगन, तो हाउ कैन यू रिलेट विद ये सारी क्वालिटीज आप उसके पार्टनर मेल अगर कुंडली हो तो? देखो पहली बात तो वो लगन लॉर्ड है जी, तो क्वालिटीज उस इंसान की लूंगा मैं, अभी पार्टनर की नहीं लूंगा। आत्मा कारक भी है, आत्मा कारक है, ही इज अ बॉर्न एस्ट्रोलॉजर एंड किसका है, दैट गाय would can do anything at highest level in the religion, in the astrology. सर मेरे हस्बैंड का है 9th हाउस में। I mean that guy 100% that guy would be a great meditator. He can sit for hours. Yes sir, शिवा भक्त है वो। He is a Shiva bhakta.
वो शिवा ने वहां पर आपको वो पदा में वो चीज देनी ही है। जी सर जी। आप बताओ ना, राजा राम किसकी आराधना करते हैं? Sir, Saturn is also sitting with Venus, and Saturn is in Adra Nakshatra. It's just purely Shiva. It's a superb Shiva energy. सारा दिन अब यहाँ पर पुनर्वसु में मैं राजा राम का जो रामेश्वर का शिवलिंग उन्होंने बनाया था, उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे प्रेजेंटेशन के अंदर. That is also connected to पुनर्वसु, which I'll be sharing with you. Yes, सिमरत जी. सॉरी सर, मेरे को ये क्वेश्चन जरूर पूछना है, क्योंकि सर मेरे साथ ये है कि जब से मैं पैदा हुई मेरे पास हमेशा एक पुनर्वसु पर्सन रहा है. पहले मेरी मम्मा थी, फिर मेरे कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड, फिर शादी के बाद जहाँ ऑफिस में काम करी बॉस की वाइफ, वो आज तक मुझे फोन करके पूछती है, मैं काम नहीं करती. फिर डॉक्टर श्रुति बेस्ट फ्रेंड बनी, और सर आज मुझे पता चला कि आप भी पुनर्वसु हो. No, my तो आत्मा कारक, my fifth lord is in Punarvasu. I am teaching Jyotish to you people because of my research is Mrigshira, and I am teaching Jyotish because of Punarvasu. सर मेरे आसपास इतने सारे क्यों एकदम से आ रहे हैं? पूरी It happens, you know, it happens. It happens, you know, it happens. ये इसके पीछे बहुत गहरी चीजें हैं. हमें तो वो मैप नजर आता है जब हम मेडिटेशन में होते हैं. आपको किसी दिन जब आप लोग सब हम एक साथ इकट्ठे होंगे, आपको मैप दिखाएंगे. वो will show you that map, don't worry. ठीक है सर, sure, definitely I'll wait, sir. Yes, Nandita, you have a question? You have a raised hand? Yeah. I was wondering what happens if you have Mars in Pada 4 Punarvasu in the 9th house? In the 9th house, what lord, what is the ascendant? The ascendant is Scorpio. Scorpio ascendant. Yeah, so it is again, see, the same combination, the Shiva devotee transformation into Jyotish, occult sciences and everything. Who is he? He's my nephew. He's a little troubled. I've got a that is collection because of them. some other combination he must be, right? Yeah, he has 4 planets in that Oh. 9th. He's got his Mars, Venus, Sun, and Mercury. And but by any chance, any of the planets are combust? Mercury, because it's same degree as Sun. The other ones are far. Okay, we'll have to check. Lot of other combinations too. And what dasha he's going on? Sun and Antardasha of Saturn. Whatever the circumstances is, one thing is for sure, that he will bounce back. Yes, I can see that. Yeah. He will bounce back. Yeah. There's no doubt about it. The rest I can take up the chart individually and then I can let you know. But then he'll bounce back. This is a great, I've been wanting to tell Dr. Shruti, if you and Sir can do a video on bipolar people. So many people here in the US are as classified as bipolar, and they're immediately put on meds. And he's been classified most recently bipolar. And he's young, he's 23 years old, and he's a total mess, but he's so bright in education. But he gets so manic when his bipolarism acts up. So I wonder what that looks like from astrology, and what could be some Ayurvedic or other things that could be a solution. I mean, this is a great idea. I'll do a video with Dr. Pooja and Dr. Shruti together. Yeah. Right. So with 3 of us, we'll do this video, and it's going to be a great one. So we'll have 2 doctors on the panel, right? And both. आपने मेरे दिल की बात छीन ली. अच्छा जी, नहीं वो तो नंदिता पटेल जी ने छीनी है. After your last video, I was listening last week, and I thought, wouldn't it be great if you could address this topic, because so many young children are classified here in the US for some reason. Yeah. We'll do it. We'll do it this week. We'll try to do this. Okay. Yeah. So great. Thank you. Okay. Sir, Hare Krishna, sir. Hare sir, Krishna. Can I relate Punarvasu with a simple example? Yeah. Tell me. Like you were telling, Punarvasu is related with bow and arrow. Yeah. So it is like a conservation of energy, law of conservation of energy. Yeah. This is stretched bow. It is potential energy, and then arrow is gone. It is kinetic. Yeah. Again, arrow coming back. Again, it is
restoring the potential energy again, Yeah. kinetic again, potential Yeah, again. yeah. So जैसे आप बोल रहे हैं ना, bounce back. Yeah. So we can relate with a simple example that That way is so also. beautiful. I want to tell something related to this is like these people recharge themselves at home. The Punarvasu people, they'll go out, they'll come back. And if you have your 10th Lord, right, or the 5th Lord, right, or the 11th Lord in the Punarvasu, 99.99% these people will work from home or they will work a place near to the home. They'll work from home. See, what am I doing? Because what is the arrow doing? Going, hitting the target, and then coming back to the home. That's the energy Dr. Pooja is talking about. They'll recharge themselves from the home, all the time. Right? So these people will go abroad, they will not settle there. They'll come back home. You have told the same thing for my younger son. Yes, Yes. Punarvasu, second pada, and in Jupiter Punarvasu, sir. So now you can realize why did I say that. Yeah. And 2-3 things you told and they're matching up. Oh, they have to match, And all the qualities are obviously, but he's too small, but everything is matching up with him. You know what? Punarvasu people have limitless force and energy inside them. Because what is the force of the arrow? Limitless. Limitless, exactly. Right? And especially अगर वो राजा राम जी का एरो है तो वो तो लिमिटलेस है, छोड़ दिया तो कहीं भी जा सकता है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकता है. Imagine. And also they have a lot of inner resources because of which they don't give up. उनका अपना inner resource बहुत ज्यादा होता है. ऐसे लोग, my wife used to say that नवनीत तू पढ़ता कब है, जब तेरे मतलब एग्जाम है, तू पढ़ता तो है नहीं, मैं तुझे देखा तो है नहीं पढ़ते, और जब रिजल्ट आता है तो यू ब्लडी टॉपर, तू कहाँ से ये सब करके आया, तू मतलब उधर तूने आईकेस से भी पढ़ाई किया, इधर भी किया, तो उधर जब देखो तो टॉप में आ रहा है, उधर 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 में आ रहा है. When are you? See, Punarvasu people will have natural resources inside them, gifted by Raja Ram. And they will multiply that resource. They are very good of replicating, repeating, and copying things, and then, adding their own resources and delivering. Exactly. That's Punarvasu. What did Raja Ram do? जब उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग किया उन्होंने, तो वो क्यों किया था, किसी को मालूम है क्यों बनाया था उन्होंने? What was the reason? Sir, before the Lanka war. Why? He wanted to meditate Shiva for winning that war. Why? No, he could have already, he knew he was going to win it. No. Why? He replicated Shiva there just to get one approval and waiver. Waiver from Brahman Hatya. Okay. Because Ravan was Brahmin. Yes. He wanted a waiver from the Brahman Hatya. And Ravan was called for that puja before Shivling Sthapna. Everything was a Leela. But the purpose of that was to get forgiveness from Shiva for the Brahman Hatya. Because he knew as a Kshatriya he is going to kill a Brahman. Yes or no? Yes, sir. See, we understand what is there, but we'll have to go a little deeper. Little more deeper to understand what is what. Yes, Dr. Shruti. एक चीज जो मैं और भी देख पा रही हूँ, जैसे राजा राम की भी शादी अच्छी नहीं रही है. मैंने अपनी लाइफ में तीन लोगों को देखा है जिनका पुनर्वसु मून में है. मून पुनर्वसु में
वहां तो डिवोर्स पक्का ही हुआ है, देखो डिवोर्स की बात नहीं है, पुनर्वसु की दिक्कत ये होती है कि उनकी मैरिड लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल करती है, बाकी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं। दैट इज इट। बट यस, द मैरिड लाइफ अपने कर्तव्य की वजह से सफर करती है, अपने कर्तव्य की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर task, because of their aim in life, the married life suffers, not because of their personal reasons. I mean, that's what I'm saying, कि marriage struggle Because of the environment and profession, the married life suffers. So based on that, do you think if we were to look at Sita Ji's Kundli, she would have Punarvasu somewhere in there, or no? Because her married life suffered as well, no? Ram ji ki thi na, one of the kundis is bad, the other kundis may not be able to cover. Look at Donald Trump's chart, if you want to look at his chart. He has 2 planets in Punarvasu. His 10th lord is in Punarvasu and his 7th lord is in the Punarvasu. So how many marriages has he done? 3. Huh? 2, 1, 2, 3, 4, 5. 4? 3. I have no idea because I don't want to get sued. But he's done more than one, maybe. Right? So, so I don't know. And how many times he's done his business, he has shown the bankruptcy and then he's bounced back. You understand? So what we'll do is tomorrow we'll cover a lot of planets, each planets, in Punarvasu, we'll share the presentation and the remedies. Because I have a consultation in 10 minutes. It's 9 to 5. Tomorrow is Badhak wala na? Badhak, it's a combined class. तो फिर पुनः कैसे पढ़ेंगे? Next week. Next week पुनः पढ़ेंगे. पुनः पढ़ेंगे. आद्रा की रेमेडीज हुई है क्या? आद्रा की रेमेडीज. सॉरी? आद्रा की रेमेडीज. आद्रा और पुनर्वसु की एक साथ करवा दूंगा रेमेडीज. आद्रा की और पुनर्वसु की कल कंबाइंड क्लास ले लेंगे 7 o'clock फॉर बाधक. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो. सभी 4 बैच आएंगे, मजा आएगा, मंथन करेंगे उसमें. और आई थिंक आज के लिए इतना है. काफी एंजॉय किया आप सब लोगों ने, बहुत नॉलेज हम लोगों ने शेयर किया, मंथन किया बड़ी चीजों का. सर ऐसे लगता है क्लासेस खत्म ही नहीं होनी चाहिए. 2 घंटे नहीं होने चाहिए. 2 घंटे तो 2 घंटे हो गए. मेरी पानी की बोतल खत्म हो गई है. 2 घंटे हो गए. Sir, can I put a topic out? Just, I'm dying to know this. I know we all listen to the Shiv Purana, but it's a very, something in there that one of the stories where there were 3 sisters and, they did something wrong and they got cursed, that they were going to be mothers of Parvati, Sita, and Radha, right? And when you look at these 3 women, Sita, Radha, and Parvati, they all 3 struggled in their, I would say, their marriage life, right? Yeah. It was a battle for them to be with someone that they wanted. And Radha didn't even get married. And No. Hold on. Radha got She didn't get married to Krishna. No. She hold on. She got married to Krishna. I'll tell you the story later on. Okay. Okay. Yeah. Radha was married to Krishna. Okay. 100%. I'll give you the sources and I'll show you the mandir in Vrindavan where she got married. Okay. All right. So yeah, next please. Yeah. So it just, when I heard that story, they didn't really get into the 3 women. They just kind of left it that, the 3 princesses or something. And I can't remember the details that they will give birth to, one will give birth to Parvati, the other one would give birth to Sita and Radha. But that made that thought stuck in my mind, that what was the karma or the story where all these 3 women found it so difficult to have or achieve their personal life, right, with their husband.
See, there was, because every you look at Ma Sita, it was the shrap of Ma Lakshmi. You know, that was given to Ma Lakshmi, that she'll have to stay that much time away. Right. You know, so everything has come out of a shrap. Okay. So they are curses that they are, you know, settling. You know, like Right, if you right. will ask me who was Ravan, tell me who was Ravan. Why did he wanted this arrow of Raja Ram to die? Was it Dwarpal of sir. Dwarpal or Vishnu ji, Vishnu? Yes, sir. right? He and his brother. Like his name was Vijay. Jai Vijay. Jai Vijay. Jai Vijay. Vijay. Right? Yes, sir. Jai and Vijay. Okay. So two options given to him. 1,000 lives or 3 times of 3 times, yes. of 3 times death enemy. from Vishnu. Right. One by being a Ravan, the other one by Hiranyakashipu. Right? So everything has come out of a curse. So there are mythological stories for everything. That Right. what sort of curse they have, you know, taken in their life. So that's why, because the other topic was like when Shiva is married to Sati and Sati gets angry and she throws herself in the fire, you know, once Shiva got very angry and destroyed everyone and killed everyone, he eventually did bring people back. Then, so the thought in my mind was like, well, if he brought everyone back, why didn't he bring Sati back at that time? But I guess because it was a curse of her to stay away from him that much. How many times he's brought Sati back? You know that? Yeah, I mean, many times, but that Many particular time he didn't. He brought someone else back. Every mund that you see, you know, in his mund mala is basically one of the, you know, munds of Sati. I had no idea. And he's वो कहते हैं आप जाते रहते हो, मैं आपको बुलाता रहता हूँ, बुलाते रहते सजा के रखता हूँ मैं, क्या करते हो आप? So you go a little bit more deeper and go further, you'll get all the answers. Just go through all the Shiva Purana, all the 24,000 shlokas. Just go through them, and then you will understand. धीरे धीरे that ये कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है. ओके, विनी को लंबी लंबी सांसें आ रही हो, कह रही पता नहीं क्या हो रहे हैं. तो मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैं ऑनेस्टली मैं भी यही बात करना चाह रही थी. सो इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी. सब कुछ तो किसी की बीवी के साथ कुछ हो गया, किसी की कहीं कोई हवन हो रहा है तो उसमें किसी की वाइफ के साथ कुछ हो गया. मतलब चुल तो भगवानों में भी है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है. ये हर एक लीला है. ये लीला है. उसके पीछे कार्मिक, इट्स अ कार्मिक सेटलमेंट दैट इज हैपनिंग. सर मैं खोती ही चली जा रही थी. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था you खत्म ही नहीं, need किसी की 10, किसी की 1000. No. This is, and everything is asexual. Okay, there's nothing sexual. Everything is asexual. इसके पीछे उस लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी to understand. You know, the day a guru will keep your hand like this on your head, that day you will start understanding this. Not before that. मेरे तो भी वही हो रहा है कि सिर्फ किताब खोलो और उसका एक फील ही ले लो. मैं तो सिर्फ वही ज्योतिष कर रही हूँ, अभी के सुन रही हूँ. सुनिए मेरी बात. ज्योतिष, पुराण, वेद कभी भी पढ़ने से नहीं आते हैं. You will never understand them by reading. A guru has to teach you. When a guru will teach you the Shiva Purana, then you will understand the real meaning of Shiva Purana. You read this for 5,000 times, you will not understand. Yes, sir. You Where will do we not sign up? Sorry? Where do we sign up for the class? You hear only, okay. That is the reason why, you know, most of these Westerners who've translated our Vedas, they've like literally translated the words, the context and the real meaning behind them. They don't know. They don't know. Which is why like people are reading like the wrong translated form of, Yes. you know, scriptures. So Like- what should we do now? Should we keep, You should keep patience listening? and hang in there. We will teach you. So we should not listen to the Shiv Purana now. You can listen them, but do not adapt them. Look at Yogi ji, what he's saying. Yeah. He's saying that you can listen to them like that. What happened to Nandita ji?
she has listened to it, but she doesn't know the logic behind it. So that's what is happening to me So also. that will be taught to you by a guru, a teacher. You know, you understand a concept in Jyotish, right? But what is behind that concept will be given to you by a guru. Yes. This is another course coming up. You understand. See, next course which I'm coming up is a prediction course, right? What I've done is, from last 2 months, whatsoever consultation I have taken, whatsoever consultation I've given, I am just writing their profession, their married life, their health, and everything in front of, you know, those people, and I'm creating a data. So maybe in 6 months I'll have 50 horoscopes of doctors, then of chartered accountants, for models, for divorced people, for cancer people, for sick people, for this people, and then we start 100 kundi consultation or prediction course, where we'll find how somebody's become a CA, how somebody's become this, on what year, and how this somebody's become this, what happened to this. After you've done with the nakshatra, we'll go on to the prediction course. Yes, sir. So I'm sure you'll be finding similar patterns in these charts. 100% similar patterns, Rachit. I've got 20 yogas of divorce, you know, in 20 divorce charts. The moment the chart comes in front of me, I say, this is a divorce. And it is a divorce. That's it. That's 50, after analyzing 50 charts of doctors, the 51st chart that you see, you know he's a doctor or she's a doctor. Wow, excellent. So that's simple. Then we'll go to that course, and you people become that fantastic, you know, astrologers in this world. We can rule this world like that. But then again, to interpret those things very, very minutely, you know, you need to have a guru. And this course was suggested by Yogi. He said, Navneet sir, let's have a predictive course. Yes. And we'll do it. Once you have nakshatras under your belt and you have all the ammunitions to fire, we'll do it. This is forming the base. Yes, this is the base. This is the knowledge source. And that particular day, I will bless each one of you personally with my hands to go and start doing the consultations. That very day, I will allow each one of you. Especially, sir, the Vargas. Everything, yeah. Everything will cover. The Vargas divisional charts will take on. Let another 2 months, let us put another 2 months for Vargas. And then we can move on to the prediction course. No problem. This is getting overwhelming now. Right. So this is what we've thought of this journey. Okay, चलो अब 2 मिनट रह गए, फोन आने शुरू हो जाते हैं हमको, ठीक है? सो अपनी परंपरा करते हैं, राइट?